moving charges. Let me recall in geometry. So we had a charge E. So then moving with velocity V, and we defined a beta as V over C, and then it might also have an acceleration. In general, it's not zero. And let's say the position is RP of E prime, and this is our point where we are observing the field, and this is a vector R minus RP, which we call capital R. So for this situation, that a charge is at point RP moving with velocity V is in general producing an electromagnetic field at point P, which we computed to be as E minus beta square kappa Q cos square and H minus beta plus kappa Q R n cos n minus beta plus beta dot, and V is nothing but 1 over C, and they are all evaluated at f of t phi is equal to 0, where different things like n is nothing but a unit vector along this direction, and this is n hat. R is this, kappa is 1 minus n hat dot beta, and f of t is t prime minus t plus r. This is what we had last time. So today we will take special cases and discuss the derivation from it. And before I do that, let me just remark that this is a part of the field which is independent of acceleration, and it is present even when beta dot is 0. So this is what we usually call the static electric field or moving electric field. And in a special case, when beta dot is 0, that is, this beta is constant, this actually reduces to the electric field that we have already formed. Remember, when we were transforming the field, we did find the field of a point charge that is uniformly moving. If you remember from there, the uniformly moving charge had a field like this, right? Because of length contraction, the field intensity has increased perpendicular to the direction. So I'll give you a homework problem where you will show that this term indeed reduced to that term when beta is a constant. So, but now we are only interested
in the radiation part, and the radiation field is this. And also you see this has an R dependence of 1 over R, this has 1 over R squared. So this term decays very quickly when we move away from this charge. So far away, only this field is felt. This is what is radiated. Similarly, B radiated would be so this is the formalism that we have, and let's today discuss two special cases. So this is the general field that we have. So let me now specialize it to a simplest perhaps possible case, and that is linearly accelerating charge. That the charge is moving in a straight line, first of all. So this is the direction of beta. You can imagine a linear accelerator. For example, अगर आप electron को accelerate कर रहे हैं, you can have negative plate here and perhaps a positive plate here, and the electrons are pushed across. So electron is accelerating very briskly. So in linear accelerator, that's what happens. That electrons are accelerated on other particles along a straight line. So acceleration is also along the same direction. And this will apply to the deceleration as well. For example, you are shooting alpha particle or other fast moving particles on a metallic target. So when the particle reaches close to metal, they decelerate before reflecting back. So that phase when they are decelerating is also a situation like this, where deceleration is in the same direction as the velocity. And I'm only considering the head-on collisions and coming back, not the deflections into other directions. So this also covers that, deceleration, acceleration, when they are both in parallel and they are both long or similar. So let's see. The E radiated would then simply become E over 4 pi epsilon naught n cross beta, right? The term beta cross beta dot will go away because they are both parallel. So this is C. So we have this as the radiated field, and B radiated is 1 over C and A. So let's try to compute the radiated power in space. So radiated power we can compute it from the Poynting theorem. So Poynting vector, if you recall, is actually the energy per unit time per unit area that is carried by an electromagnet. So this Poynting vector is nothing but, if this is Poynting vector, this is power by d, and this is defined as 1 over mu naught E radiation cross D radiation. So this becomes, let's say
at the instant that we want to compute the radiative power, the charge is somewhere here, and we can locate our origin at this point, and then the power radiated into this solid angle d omega, we can compute it from here, because this area dA is nothing but, if this distance is r square d omega, where this d omega is the solid angle. It is defined as sine theta d theta d phi. So solid angle is the area of a unit sphere when you project the same area onto a unit sphere. कोई भी arbitrary area है, अगर आपने find करना उसका solid angle कितना है, तो you project the area on a unit sphere, on an imaginary unit sphere with radius 1, then this area is the solid angle. So इसके corresponding जो unit sphere है उसका solid angle, if it is d omega, then we can relate this area and this area by this formula, because the areas of spheres scale as r square. Okay. So with this thing we can, so this is a scalar thing, so this is the magnitude of this pointing vector. So अगर d एक की जगह पे आप ये रखते हैं r square d omega, so we have d omega r square over mu naught. So what is this thing? This is E radiated cross n cross E radiated. इसको ओपन करने a cross b cross c के फॉर्मूले से. So b into a dot c. So this becomes E rad dot E rad, which is E mod square, and then we have the other term is minus E rad into n dot E rad. लेकिन ये जीरो होगा, राइट? क्योंकि अगर इसके साथ आप n डॉट ले दिए तो ये वेक्टर जो है n के परपेंडिकुलर. So whatever this is n cross this, so this vector is perpendicular to n. अगर आप इसका n के साथ डॉट लेते हैं तो आंसर होगी इजी. इसका n के साथ डॉट नहीं, ये बीच के स्टेप भी अभी ये जो है ये मैंने a क्रॉस b क्रॉस c के फॉर्मूले से एक्सपेंड किया. तो ये होता है if I am not mistaken. ये होता है. तो ये n dcm with this dot this is e rad square dot square minus ये आ गया. तो फिर इसका डॉट जो है वो यहाँ पे और ये जीरो होगा क्योंकि n डॉट e जो है यहाँ से चेक कर लें फिर से दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n, राइट? क्योंकि ये n क्रॉस समथिंग है ना, तो ये सारा क्या हो जाएगा n के परपेंडिकुलर हो जाएगा. So this is 0, so this term goes away. So essentially the power is radiating in the direction of n when it is computed at time t, which makes sense also as well. You write it simply this. So यहाँ पे सॉरी एक 1 over c भी था, तो ये c बाहर आ जाएगा. So we have r square mu naught c e
P वैल्यू पहुँच। So ये यूनिट वेक्टर तो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1 हो जाएगी, so ये आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड लेने से पहले देखिए ये क्वांटिटी है पॉइंटिंग अलोंग n हैट के एट टाइम t, लेट्स से इस पॉइंट पे हम पावर फाइंड कर रहे हैं, तो दिस इज प्रोपोगेटिंग अ वेव along a line n हैट at this line p. So ये जो हमने पावर कंप्यूट की है, दिस इज द पावर at time t with the power that we are seeing right here. और जो पावर सोर्स ने रेडिएट की है in its own frame sort of, that is in general different than this thing. ठीक है? Because both of them is happening at different times, so that's why they are both different. क्योंकि इस वक्त हमें जो पावर नजर आ रही है इस स्ट्रक्चर में जा रही है, this was the power that was radiated by this particle a while back, not right now. So जो अब को radiate कर रहा है, that is something different, and we can actually compute the power that is radiated by the charge in its own frame by a simple chain of transformation. We know that this dp of t by d omega, which is nothing but this thing, right? So this is the power which is, if this this E is energy, so d energy by dt is the power, and if instead of finding this power with respect to t, we can find it with respect to t prime by this chain rule. So then I can put this dt prime by dt here. So this derivative is now respect to dt prime. So this dt prime by t can be computed from f of t prime. अगर उसको आप रिस्पेक्ट टू t प्राइम कर दें तो 1 माइनस dt by dt प्राइम प्लस 1 over c, और ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, so we know that this dt by dt prime comes out 1 minus beta dot n hat, which is kappa. So this is 1 over kappa. So this, let's call it some p of t prime. So radiated power at time t is related to the radiated power at time t prime by this factor 1 over kappa. You go time when Of course, because it has beta. This is beta dot n. So beta is time dependent. So essentially, अगर आप operationally देखना चाहते हैं, तो this becomes dp prime by d omega. अगर आप ये कंप्यूट करें, this is kappa into this, तो यहाँ पर मैं kappa से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अब देखिए दोनों में f of p प्राइम इक्वल 0 है, इस रिलेशन में भी और इसमें भी. फर्क सिर्फ ये है क्योंकि ये फंक्शन है जिसके अंदर t और t प्राइम दोनों है. When you are evaluating something as a function of t, आप इसमें से t प्राइम एलिमिनेट कर देंगे इस इक्वेशन की मदद से. ठीक है, क्योंकि इसमें t और t प्राइम दोनों है. आप t के लिए सॉल्व, t प्राइम के लिए सॉल्व करें, इसमें पुट कर दें तो t प्राइम खत्म हो जाएगा हर जगह से. You have a function of t. अगर if you want something a function of t prime from the same equation, you can eliminate t, so you get your quantities at time t prime. So
let's now find out exactly what this function is. Kappa r square, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि mu naught epsilon naught होता है 1 over c square. So mu naught is epsilon naught c. So this is now e square 4 pi epsilon naught square c square kappa 6 r square n cross beta dot mod और इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो r square से कैंसिल हो गया, एक एप्सिलॉन नॉट हो गया कैंसिल, सो वी हैव 1 over 4 pi epsilon naught e square, एक c भी कैंसिल हो गया, so we have 4 pi c अगर आप p फ्रेम में करना चाहते हैं तो यहाँ पे kappa 6 होगा, अगर आप p प्राइम में हो तो यहाँ पे kappa 5. So mod so let's now try to work out this relationship, and for this let me assume for simplicity that actually don't have to assume, but let's say we redraw this figure. So suppose this is the direction of particle velocity and particle acceleration, and suppose this is the direction of observation, and let's say this is angle theta. So this is the n vector. N vector is again in the direction of r minus rp, and let's say they both make an angle theta with each other, so that this n cross b is what? This is its magnitude 1, its magnitude, let's say beta dot, angle between the two, sine of the angle between the two, sine theta, and then n cross b. So this is n cross b into the board. Then let me call it some vector x. This is not necessarily x-axis. This is just some unit vector into the board. So then n cross all of this is so this is n, and this vector has, so n has magnitude 1, this vector has this magnitude, and what is n cross x? So this is n, so n cross x, so this is some vector in this direction. Let me call it some y, so this is y, and when I have to take its magnitude square, this y hat simply goes away, and we have a very simple expression, 1 over 4 pi epsilon naught e square 4 pi c beta dot square sine square theta 1 minus, and what would be kappa? Kappa is 1 minus beta dot n hat. So the angle between the two is theta, so this is 1 minus beta cos theta, so 1 minus so this is the angular distribution of power with respect to the coordinates of the charge. And this is fully general case. Beta can be anything. It can be anywhere from 0 to
whatever height 0 to c. कोई सवाल है कैलकुलेशन के बारे में? क्योंकि कुछ होमवर्क और एग्जाम में आप उस तरह कैलकुलेशन करते कभी भी पढ़ सकते हैं। They are, by the way, simple. So let me discuss two simple cases. The first is the non-relativistic case. Well, this is an unfortunate term for slow velocities, even though everything is relativistic, by the way. So for this case, let's say the particle is moving slowly, but it is still accelerating. It is not that it's not accelerating. So you can imagine कि जो ही आपने एक्सेलरेटर के अंदर पार्टिकल छोड़ा है तो शुरू में उसकी स्पीड तो कम है लेकिन एक्सेलरेशन तो काफी है क्योंकि इट्स गेनिंग स्पीड. सो इन दैट सिचुएशन आई कैन रफली अप्रॉक्सीमेट बीटा टू बी 0. सो बीटा डॉट स्टिल नॉट 0 क्योंकि अगर बीटा डॉट 0 है तो पावर वैसे ही 0 है. यू कैन सी as soon as the acceleration is 0 beta dot there is no radiating power. The charge is not radiating at all. It only has that coulombic term n minus beta. So when it is accelerating but the speed is slow, we can approximate, well, all of this is some constant, so let me call it a giant C1. So we have beta dot square sine square theta, because this is a constant thing. So if you look at this function, so this is the direction of the charge motion. So theta is the angle of direction of radiation and the direction of motion. So this is maximum at where? At theta is equal to 90. So maximum radiations are occurring here and radiations in the direction of the charge particle motion and in the backward direction they are both 0. And as we increase, as we come from 90 degree to either this way or this way, the magnitude begins to decrease. So अगर आप प्लॉट करें नॉर्मल एक्सेस में जो आप करते हैं, so then 0 to 180 it is very easy to plot that. It's like this. It's the sine square, right? It's maximum at theta 90 and it's 0 at 0 and 180. But in polar plots, this is usually shown as a figure 8. So essentially a slow charge which is accelerating in this direction is radiating perpendicular to it, most of its energy, in our direction, and it's independent of phi. So a particle is moving like this. So in this plane perpendicular to this particle, the maximum radiations are being emitted. दूसरी डायरेक्शन में भी है, ये ना समझे कि दूसरी में कुछ भी नहीं है. It's 0 only along this line. थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी है रेडिएशन, ठीक है, और फ्रंट में भी है. और प्लस ये देखें कि चूंकि ये बीटा डॉट स्क्वायर है, एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. रेडिएशन पैटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ whether it is accelerating or decelerating, because it's beta dot square. So both for the slowing and for the accelerating charge is the same radiation pattern. So it's essentially a donut shape. अगर particle यूं जा रहा है, you can imagine a donut around it. In this direction it's maximum, and in this direction it is decreasing, and along the direction of motion it is. So that's what slow charge do when they accelerate. They radiate energy perpendicular to their motion. ठीक है ना जी? So let's now see the other part, the other case, which is the general case. Usually लोग इसको relativistic case भी कहते हैं. General or relativistic case, so we have this actual thing. And to see that what is the direction of maximum radiation, all we have to do is find the solution of this equation. Okay, beta dot, you have to take this out. Okay? Acceleration constant and we can Plus
क्योंकि हम थीटा के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, तो इवन इफ इट इज नॉट कांस्टेंट इट गेट्स, क्योंकि ये जो dp as function of time, so even if it is not constant, this is still valid. So this expression is function of time. So is जहाँ पे ये function maximum है, that's the direction of maximum radiation. So it's actually not that difficult to solve. आप पहले इसका डेरिवेटिव ले लें, 2 sin theta cosine theta, ये वैसे ही आ गया फंक्शन, प्लस ये वैसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव होगा -5 पावर 6 और फिर इसका डेरिवेटिव माइनस बीटा और कॉस का होता है माइनस साइन, इससे साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस, so this is 2 cos theta 1 minus, so minus 5 beta sin square theta, ये इक्वेशन मिली। अब एक तो सोल्यूशन इसका है sin theta equal to 0, right? But that's not a maximum, क्योंकि अगर इसमें आप theta 0 को करें, this becomes 0. If anything, this is actually a minimum. ठीक है, मतलब इस इक्वेशन का जो sin theta equal to 0 है, that's actually a minimum. So उसके बाद one possibility is that this is infinity, which is not possible because all of these numbers are finite. Even beta cannot be greater than 1. So that part also goes away. The only possibility is that this thing is equal to 0. So two cosine theta minus 2 beta cosine square theta minus 5 beta 1 minus. अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोसाइन थीटा, इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशन आ जाएगा। दो है इसमें, हाँ सॉल्यूशन से नहीं आएगा। लेकिन जो माइनस वाला है, सो दैट वो होगा थीटा माइनस के लिए, ठीक है। सर चलिए थीटा ऊपर और थीटा नीचे, सो वी कैन ओनली डील विद दिस सॉल्यूशन विद द प्लस। So this is the angle where the radiations are maximum. पहले तो क्विकली देख लें कि क्या ये नॉन रेलेटिविस्टिक केस को रिप्रोड्यूस करता है कि नहीं। When beta approaches to 0, what's this thing? So you will have to evaluate, but it will come out to 0. Evaluate कैसे करेंगे? क्योंकि allocator रूल से beta 0 पे ये 0 over 0 बन जाता है. So you derivate this thing and इसका derivative तो 3 आ जाएगा और इसके ये खत्म हो जाएगा and you get half. Then minus half, तो बाद में बीटा 0 पुट कर लें तो 1 की पावर माइनस हाफ दैट इज गॉन, और फिर इसका जब लेंगे तो you get 2, you can work it out, okay? When beta goes to 0, what work you get. Let's see the other part. When beta goes to 1, that is B goes to C, what do we get? When beta goes to roughly 1, this is 1 plus 15, 16, 4 minus 1, 3, 3 over 3, 1. So cosine, so this is the case that we usually call ultra relativistic. So cosine theta goes to 1, then theta goes to 0. And in between, the situation would be like this. So this is the direction of motion. So beta 0
will reproduce this thing. दूसरा उल्टा और जो beta is equal to 1 is roughly 8, and in between when beta increases from 0 to let's say 0.2, like this, beta 0.2, when beta is let's say 0.8, so it's like this. So as the velocity increases, not the acceleration, the important thing is not the acceleration. for any given acceleration it will For any given acceleration, the pattern would be the same. Only the pattern intensity will be different. क्योंकि बीटा डॉट स्क्वायर है ना, तो जितना बीटा डॉट होगा उतना वो इंटेंसिटी फॉर्म होगी. But even for a very small beta dot, the radiation would be there, and the pattern is independent of beta dot. In किस direction में maximum होना है, it only depends on the velocity. ये लोग की चीज़ समझिए, लोग की शिफ्ट Because this is the, we are measuring theta from this side. So theta 0 जो है वो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम है, तो बाकी डायरेक्शन में भी कुछ पैटर्न होगा. Because actual pattern is given by this function. आप इसको कंप्यूटर में प्लॉट कर सकते हैं. लेकिन हमने मैक्सिमा जो है वो फाइंड किया है. मैक्सिमा इज गिवन बाय this. It is dependent on beta. So beta 0 पे maximum 90 पे है, तो इसका मतलब है radiation pattern roughly इस तरह का होगा कि इस सेक्शन में maximum है, इधर तो 0 है, so it's और similarly जब beta increase होगा तो theta जो है ना वो increase होगा. जैसे यहाँ पे अब 0.2 पुट करें, 0.2 पे ये होगा 15 into 0.2, कितना बन जाता है 1/5, 3, 1 plus 3, 4, 2, 2 minus 1, 1, 0.2, 1/6 बन गई या गड़बड़ हो गई. Let's say beta 0.2 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 plus 15, 2/5, 2/10, ये हुआ 1/5, 1/25, तो roughly 1 plus 15/25 minus 1, so this is 6. यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा. तो if you have calculator, you can work it out. Only calculate here. Square root 1 plus 15 0.044. सारे के साथ 0.0.44. So this is good. So it's less than 1, and it means that theta is now greater than 0, and it's since it's greater than 0, so it means that theta is no smaller than 90. So similarly, आप beta increase करते जाएंगे तो you will see that this number approaches 1. तो इसका मतलब है कि जो maxima है वो इस theta. और again, this thing is independent whether it is accelerating or decelerating. It's only dependent on the direction of velocity and not the acceleration. So अगर charged particle यूं जा रहा है, जैसे तो charged particle ऊपर heaven से हमारी अर्थ की तरफ आ रहे हैं, since they are very high velocity particles, उनसे जो radiation निकल रही है, they are also pointing towards Earth if they are accelerating. By the way, most of the radiation से हमारे पास जो particles आ रही हैं, they are not because of this acceleration, because almost they have a uniform velocity. We'll study that thing, that's channel of radiation.
क्योंकि even with uniform velocity you can have radiation. When the velocity is greater than the velocity of light in that medium. For example, air का effective index है 1.00 something. उसका मतलब है speed of light air में होगी तकरीबन 0.99 c जो allowed है. तो अगर कोई particle air में travel कर रहा है जिसकी velocity 0.99 c से ज़्यादा है, but of course less than c, so that will also radiate. So even if there are accelerating particles, then decelerating हो या accelerating हो, दोनों सूरतों में क्योंकि वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, उनकी से radiation निकलेंगी, they will be pointing towards Earth. So if we have detector here, so we will easily be able to see those radiations. दूसरी आप यहाँ पे आप difficulty भी देख सकते हैं. When you are building a linear accelerating accelerators, it's not as simple as it sounds. That you put two plates here, you will be able to accelerate a particle to virtually to c. You can, because as you are accelerating the particle, the speed is increasing, they are also radiating. When they are radiating, it means they are losing energy and they are losing momentum as well. So you are giving momentum with the electric field, but they are radiating and they are losing momentum. But fortunately, the change in momentum due to radiation, or the energy that is lost in radiation, is significantly smaller than the change in momentum that they get from the acceleration. So that's why overall they will be accelerated. लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं काउंट किया, हम तो कह रहे हैं कि v of dt डिपेंडेंट टू पैरामीटर है ना, हमने यहाँ पे कहीं काउंट नहीं किया. इसलिए हमने ये नहीं देखा कि b कहाँ से आ. हाँ, b कहाँ से आ रहा है चेंज. But let's see. We can actually do that very easily because the change in relativistic momentum. अच्छा, ये रेडिएशन पैटर्न अब आप समझ लें. ये अभी भी जब ज़्यादा हाई स्पीड पर चार्ज है, अभी भी डोनट है, लेकिन अब डोनट जो है ना वो थोड़ा सा यूं करके हो गया. जैसे जो d ऑर्बिटल की वो शेप अगर आपके ज़हन में है, so it's a loop, only half उसका पार्ट. अगर d ऑर्बिटल तो सिमेट्रिक है ना, तो नीचे भी इस तरह से करके लूप है, इसमें सिर्फ एक ही साइड पे लूप है, in the direction of the motion. Let's see the change in momentum. Okay. So dp by dt prime. So I don't know कि हमने momentum का फॉर्मूला ड्राइव किया था. Relativistic momentum. I think we did modify the Newton's second law where we saw that the relativistic momentum is given by this. So this is the momentum of the particle. So the force on the particle, which is dp by dt prime, can be found from this, and you can find this by chain rule. So m v dot plus m v वैसे का वैसा, और इस 1 over का डेरिवेटिव आ जाएगा minus half c by 2, फिर इसका डेरिवेटिव which is minus 2 beta, and then v dot, right? ये बीटा है ना, v over c, तो v square over c square का डेरिवेटिव क्या आएगा? अच्छा, minus 1 over c square 2v v dot, तो दोनों के नीचे एक c चला जाएगा, तो ये भी बीटा डॉट. अब c लगा के इसको भी बीटा डॉट बना. माइनस और 2 खत्म हो गया. We have m beta square beta dot 1 So let's define another thing, which is gamma. Like this. So this is gamma.
और ये है गामा क्यू। ये बीटा स्क्वायर का बनेगा, बीटा स्क्वायर होगा तो 1 over gamma square equal to 1 minus beta square, so beta square is 1 minus 1 over gamma square, तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा 1 minus 1 over gamma square। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, CM बीटा डॉट और ये गामा स्क्वायर गामा ये इससे कैंसिल हो जाएगी, so we have CM गामा क्यू बीटा डॉट। तो चलिए हमने अभी तक जो कंप्यूट किया है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। So let's see how much total power is radiated by a particle over all angles। जब ये पार्टिकल जा रहा है तो बजाय इसके किसी खास एंगल में डायरेक्शन में कितनी पावर जा रही है, लेट्स सी हाउ मच टोटल पावर इज बीइंग रेडिएटेड। सो इट इज इजी, वी कैन ऑल वी हैव टू डू इज इंटीग्रेट, राइट? So P of E prime is simply overall space। तो ये चीज है 1 over 4 pi epsilon naught E square 4 pi C, ये जो चीज है तो वहां से आ जाएगी बीटा डॉट स्क्वायर, जो बीटा डॉट स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 minus बीटा cos थीटा फाई, और ये डी में क्या होता है साइन क्यूब थीटा डी थीटा डी फाई। सो फाई पे इंटीग्रेशन है 0 to 2 पाई और थीटा पे इंटीग्रेशन है 0 to फाई वाली जी फाई वाली वैल्यू फाई वाली कितनी 2 पाई आ जाएगा, तो इससे मिलेगा 1 over 2 epsilon naught E square बीटा डॉट स्क्वायर 4 pi C 0 to पाई साइन क्यूब थीटा 1 minus फाई। ये जो इंटीग्रल है ये आसान है, डी ओमेगा जो है वो sin स्क्वायर थीटा नहीं होता? नहीं डी में तो साइन थीटा डी थीटा आपने इसलिए जो वैसे कर रहे होते हैं वो sin स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होता वो डीवी है। ये कि वैसे आप जब पोलर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d थीटा नहीं r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आप चेक भी कर सकते हैं, अगर साइन थीटा डी फाई को ओवर होल स्फीयर इंटीग्रेट करें तो 4 पाई आंसर आता है। सो 4 पाई इज द सॉलिड एंगल ऑफ अ होल स्फीयर, और इससे भी आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो dv है ये आता है, एक है dr और एक है r d फाई और एक है r sin थीटा d थीटा, ये तीन लेंथ टर्म्स हैं। सो इट्स r स्क्वायर dr d थीटा d फाई। ओके, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो आप कर सकते हैं अगर आप सिंपल ये सब्स्टिट्यूशन कर दें। Let's say cosine theta is some x, so then sin theta d theta is dx, rather minus dx, और cosine theta is equal to x आप ले लें, तो थीटा 0 में ये 1 और ये -1 हो जाएगा, और चूंकि ये माइनस dx आता है तो उसको उल्टा कर दें -1 to 1, और जो sin स्क्वायर थीटा उसके जब लिखते हैं 1 minus x square dx 1 minus बीटा x, और तो ये इसकी दो टर्म्स बना, एक आ जाएगी 1 over 1 minus बीटा x पावर 5, वो इंटीग्रल फॉलो हो जाएगा क्योंकि सिर्फ नीचे x ही है, और दूसरी टर्म आएगी x स्क्वायर ओवर 1 minus बीटा x पावर 5। आपको दो दफा पहले बाई पार्ट इंटीग्रेशन करके x स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? x स्क्वायर ओवर दिस है ना, तो x स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव इंटीग्रल लिख लें x क्यूब, उसका उधर डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर x हो जाएगा, फिर x खत्म हो जाएगा,
तो 1/1 माइनस बीटा एक्स आ जाएगा और उसका प्रिंट करेंगे। तो सिंपल इंटीग्रल आप ये दोनों कर लेंगे तो जो टोटल पावर आ जाएगी beta dot square 3c gamma power 6। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught 2e square 3c, ये है बीटा डॉट गामा क्यू स्क्वायर। अगर आपने उसका स्क्वायर बनाना है डी बाई डी प्राइम तो एक सी चाहिए एम चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम सी और यहाँ पे डाल देते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये क्यू। So this is dt by dt prime. So we have m square dp by dt. This is the radiated power and this is the sort of the force that is acting on the particle, which is accelerating the particle. ये जो टर्म है, by the way, this is called one case of Lahore formula for radiation from the charged particle. Lahore का general formula तो वैसे general charges के लिए है, but for linearly accelerating charging, the charge reduces to this form, or actually this form, without dt by dt. तो ये जो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें ना, जैसे E है 10 पावर माइनस 19 उसका स्क्वायर, फिर C 10 पावर 8 mass of electron let's say and then epsilon naught, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो फैक्टर है दिस कम्स आउट टू बी रफली 10 पावर माइनस 9। So it means the radiated power is roughly 10 power minus 10 times smaller than this number, which is the rate of change of movement. So the radiation is not affecting the momentum of the particle, though it is, because 10 power minus 10 may be small when we are building the device to accelerate the particles, but it's a real thing. If a particle is accelerating and it's radiating, because of the radiation, and there is a sort of a reaction force on the particle, equivalent, because the radiations are decreasing the momentum of the particle, which is true in if you look at it this from other sense. Electromagnetic radiations that are coming out of the particles, they actually also carry momentum. So by conservation of momentum, the particle momentum should change, because some of the momentum is being carried out by the waves. But fortunately for us, the radiation is only carrying a small fraction of the change of momentum of the particle in the acceleration. So we can have linear accelerators. If this would be a significant fraction, it would have been very hard to build accelerators. तो इस तरह की चीज़ों से कि जैसे जो radiation का जो spectrum है is coming in the direction of the particle, it's hard not to wonder that nature is conspiring in a way to make us discover science. For example, जो relativistic particle shower after continuously आता है, it's not easy to detect those particles directly, and much easier to detect the radiation actually that they are emitting. And similarly, that we can build this accelerator even though there is a factor which is opposing it, but it's possible. Any questions on this point?
Okay, so let's now go to the second special case, which is even more interesting than this one. And of course, it would be a little bit more non-trivial workload than this case. And this is a case when the acceleration is perpendicular to the velocity, not parallel. Circle is one thing, but any situation in which the particle velocity and acceleration are opposite, are perpendicular to each other, then this situation will be met. So let's say x-axis, y and z, and suppose at some instant the particle is here and moving just at the origin, the particle is moving along z-axis, and there is an acceleration along the x-axis. So if you think of this as x-axis, this z-axis, we can imagine that particle is just coming out of that origin and going like this, and right at the moment when it was at origin, there was an acceleration along x-axis. Or you can think of it going in a circle in xz plane, so that when the particle is at origin, there is a force towards the x-axis. So I'm only going to take this case. Circular motion is covered, but that's not the only thing that is covered, because we are going to deal with the radiation at just one instant. So even if we have a situation like this, that the particle, let's say, is going in a spiral, as happens in a cyclotron. तो cyclotron में कोई circular cavity होती है. You inject particle in the center, and since these are two shells, the particle begins going in a small circle, and it gets a push when it jumps from one to another other half. So there's a gap between the two shells, and you supply an alternating current, and it has a characteristic frequency which is in resonance with this the period of a circle, because that's constant during the whole motion. So when the bunch of particles is heading this way, the acceleration gets in this direction. So a particle accelerates, gets into a bigger circle, when it comes here, it gets a push, and it gets accelerated, gets into a bigger circle, and inside each shell it doesn't feel any force. So slowly its speed gets increasing, and at some instant they are ejected out. ज़्यादा जो मेडिसिन में रेडिएशन पार्टिकल थेरेपी के लिए यूज होती है साइक्लोट्रॉन. सो एनीवे इसमें भी देखिए सर्कुलर मोशन है. ये जो सिंक्रोट्रॉन होते हैं जैसे लॉर्ड्स हैडरन कोलाइडर में है, उसमें क्या रहता है कि पार्टिकल एक फिक्स सर्कल में मूव करते हैं. बट लेकिन जो होता है कि जो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है, फॉर द सेम फोर्स इट वुड लाइक टू मूव इन अ बिगर सर्कल, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है. तो उसमें भी ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट हैज टू बी synchronously adjusted to this motion. So synchrotron में जो सर्कल का रेडियस है वो कांस्टेंट रहता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसको एक्सेलरेट कर रहा है और जिसने इसको बाउंड किया हुआ है वो जो है वो एडजस्ट होता रहता है उसके साथ. इसमें जो है कि फील्ड कांस्टेंट है, जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, तो पार्टिकल रेडियस. लेकिन इसका अलावा और भी सिचुएशन डिवाइसेस हैं जिनमें यूँ होता है कि पार्टिकल कुछ पार्ट में लीनियरली एक्सेलरेट होता है, लीनियरली मूव करता है. यहाँ पे बेंड है तो यहाँ पे फोर्स करती है, फिर व्यू जा रहा है, इस तरह से ना ट्रापेजॉइड्स क्वालिटी. सो दिस थिंग इज वैलिड एट एनी पॉइंट वेयर देयर इज अ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट एट दैट इंस्टेंट. सो इट्स नॉट ओनली सर्कुलर बट एनी मोशन in which the direction of force is perpendicular to the direction of velocity. So we have this situation, which means that our radiation field
will be as it is. So we are taking an instant when the particle is just at the origin. So for simplification, let's take that beta is along z-axis at this instant, and acceleration is along x-axis, and n is a general vector which is r minus rp, but I'm taking rp to be 0, so n is nothing but r hat now, which is sine theta cosine phi x plus sine theta sine phi y plus cos theta. So this is the, let's say इस point पे आप field जो है वो measure करना चाहते हैं. This is n vector. So n hat is r hat, and r hat in spherical coordinate system is given like this. अब देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है it's very easy to evaluate this क्रॉस प्रोडक्ट, राइट. n की जगह पे आपने n रख दी, इसमें से ये बीटा माइनस कर दें तो सिंपली यहाँ पर इस टर्म में से माइनस बीटा डॉट आ जाएगा, तो ये वेक्टर आ गया. फिर इस रिजल्टेंट के साथ क्रॉस लें, z के साथ क्रॉस लें, क्रॉस आने के साथ क्रॉस लें. So it's simple algebra. The result will be beta dot into n hat sine theta cosine phi minus x hat minus अब इसमें n hat की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें तो ये इसका होगा. और जब आपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट कर ली होगी तो उसका स्क्वायर चाहिए होगा, राइट. इसका स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, ये n हैट की वैल्यू पुट करें, फिर वही कंपोनेंट वाइज स्क्वायर करें, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एंड यू विल गेट 1 माइनस बीटा कोसाइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर cosine square beta dot. इस एक चीज़ से आपको मसला तो नहीं होता, क्यों? कि अगर फर्दर में इसका रिजल्ट की क्या दिस इज सिमिलर जो ये काफी इजी है, XY. हाँ, ये n हैट क्या है, ये भी XY जी कार्डियल मैंने लिखी. So conceptually, so I hope that you know that there is no issue. ये बीटा डॉट भी ये गिवन है, ठीक है, बीटा गिवन है, n तो ये वेक्टर माइनस करना है, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट लेना, फिर उसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना. तो जब आपने मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेना तो हर कंपोनेंट का इंडिविजुअल स्क्वायर ले लें. जब आप स्क्वायर लेंगे तो चले मैं ये ऊपर की प्रॉब्लम डाल दूँ, ठीक है. तो 3-4 टर्म जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ टर्म कंबाइन होंगी. क्योंकि अगर मैं आधा घंटा उस पर लगाऊँ तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर फिर टाइम कम लगेगा. ओके, सो व्हेन वी राइट द power radiated by the particle, it is nothing but
वही जो सी ई नॉट आर स्क्वायर ई रेड स्क्वायर है, अगर ये आप सारी चीज़ें पुट कर दें तो यू विल गेट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बीटा डॉट स्क्वायर 4 पाई सी 1 माइनस बीटा 4 sin theta power 5 1 minus बीटा 4 sin theta square minus 1 r square, sorry r, this is gamma square sin square theta cosine square, yeah. So of course this is more complicated than the linear acceleration. लेकिन जो इसका नॉन relativistic केस है, that is very easy to see. So in the non-relativistic case, beta is nearly 0, so which means that dp by d omega is all of this constant, call it c1, this is 0, this is 0, so 1 minus sin square theta cosine square phi gamma. So when beta is nearly 0, gamma is actually 1. So eliminate that. तो ये रेडिएशन पैटर्न है। थीटा फाई है, थीटा फाई कैसे एग्जैक्टली थीटा एंगल है z एक्सिस के साथ और फाई एंगल है इस वेक्टर का x एक्सिस। इसको पांच में जा रहे हैं। और ये जिसको आपको ये जो पोजीशन वेक्टर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का उसके कोऑर्डिनेट है थीटा फाई। सही है। इस फंक्शन को अगर आप देखें तो थीटा 0 किसकी वैल्यू क्या है? थीटा 0 साइन थीटा 0 हो गया तो 1 आ गया, और थीटा 90 पे क्या वैल्यू है? थीटा 90 पे साइन थीटा 1 हो गया, तो हो गया 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर फाई, और 1 माइनस तो थीटा 90 होता है xy प्लेन में। तो देखो ये पार्टिकल यू नीचे से आया और ओरिजिन से होके यू गया, तो xy प्लेन कौन सी बनती है? ये फर्स्ट वन परपेंडिकुलर, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसके अंदर पैटर्न है 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर फाई, तो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर जो है फाई, तो फाई 0 जो है यहाँ पे फाई 0 है, ये 1 हुआ, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे फाई 90 है तो ये 0 हुआ तो 1 हुआ। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और इसी तरह इस प्लेन के अंदर चलेगा, यानी हाँ साइन स्क्वायर फाई, ऐसे बात है साइन स्क्वायर। सो ये जो xy प्लेन के अंदर ये साइन स्क्वायर फाई है, which is the plane perpendicular to the direction of motion. तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है और इस प्लेन में sin square phi है, which means it again has a downward shape in the xy plane. के phi 0 पे 0 है, phi 90 पे 1 है, फिर phi 180 पे 0 और फिर तो और इस ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या है? इस ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे हमने देखा 1 है, इसका मतलब नीचे भी 1 है, so it's a downward, which is और इसको पिक्चर करना आपकी मुश्किल होगा। लेट्स इमेजिन दिस पार्टिकल न्यू सर्कल में जा रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट में हम कंसीडर करते हैं। अब इस पॉइंट पे जो ये प्लेन है इसमें यूं हो रहा है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, सो इट्स रेडिएटिंग इन दिस डायरेक्शन, इन द प्लेन ऑफ द सर्कल। अगर आप न्यू इमेजिन, सो जो ये सर्कल है, तो जो सर्कल की प्लेन है उसके अंदर इन डायरेक्शन में ये मैक्सिमम, प्लस अगर हम थीटा का हिसाब लगाएं तो थीटा 90 पे यानी ऊपर यहाँ पे और नीचे जो है इट्स मैक्सिमम अगेन, सो इट्स मैक्सिमम इन दिस रीजन। सो
So particle u jar, so it's maximum in this direction. Okay, and it's 0 here, it's 0 here. So यहाँ पे थीटा क्योंकि है 0 यहाँ, अब जो थीटा बढ़ता रहेगा, अब 1 से थोड़ा कम होते जाएंगे। और चूंकि थीटा 180 और 0 दोनों का सेम बिहेवियर है, क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो नीचे और ऊपर वाली जो डायरेक्शन है अगेन वो सेम है, because sin square theta and cosine square phi. So phi में भी it's symmetric around phi 0 to 180 and 180 to 360, और theta में भी तो 0 to 90 है वही 90 to 180. So particle u जा रहा है, तो जो radiations है they are going perpendicularly away. Just like, not exactly like, क्योंकि इसका पैटर्न ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन रफली जो है it's radiating perpendicular to its direction of motion, even in the circular motion. और जो लो वेलोसिटी let's say cyclotron है, उनमें इस तरह से होता है, तो पार्टिकल u जा रहा है, cyclotron है, तो रेडिएशन जो है they are mostly perpendicular to the direction of motion. और वैसे भी आप इमेजिन करें एक बड़ा सा सर्कल, ठीक है, relativistic speech में नहीं होता, रिलेटिविस्टिक होगा तो फिर हम वो फुल जनरल केस cyclotron या synchrotron दोनों में जो इनिशियल उसमें यही होगा, जो साइक्लोट्रॉन है यूजुअली ये स्लो स्पीड पर होता है, because there's not a big of a device to get them very high cost. जो LHC है उसमें जो सिंक्रोट्रॉन होता है उसको फीड करने से भी पहले एक और एक्सेलरेटर में उनको तैयार किया जाता है, रफली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑलरेडी पार्टिकल्स के पास होता है जब वो इंजेक्ट होते हैं सिंक्रोट्रॉन में, तो वो 20-25 मिनट में दे टेक अराउंड a million turns and it can get accelerated to a few terabyte. तो वो जो आई थिंक अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास है तो छोटे पार्टिकल में ऑलमोस्ट सर्विस, लेकिन जो स्मॉल स्पीड पार्टिकल्स हैं जैसे मेडिसिन में जो यूज होते हैं फिर ऑलमोस्ट बीटा इज ऑफ दिस। तो वैसे भी जो बीटा 0 की अगर आप कंसिडर करें तो मोमेंटरीली पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, तो रफली इस रीजन में ऐसी है जैसे पार्टिकल जैसे हम लीनियर एक्सेलरेशन का केस है जिसमें पार्टिकल की जो रेडिएशन की जो परपेंडिकुलर टू जाएगा, ये केस भी है। मैं कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक तो साइड पे पैटर्न सर्कल के बना दूँ ताकि आपको ऊपर डायरेक्शन में समझ आए, और हम इसका जनरल केस जो है वो भी डिस्कस करेंगे। कोई सवाल? मैथमेटिकली ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ज़्यादा कौन सा पार्ट? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब ये फॉर्मूला लाइफ में देखो काफी ज़्यादा था, ये जो फाइनल में करते हैं इसमें कौन सा मीडियम है। हाँ, और आई एडमिट कि ये थोड़ा सा इसमें वेक्टर कैलकुलस ज़्यादा था, आगे से है उसमें भी ज़्यादा जो जैसे डेरिवेटिव हमने d/dt प्राइम में वैल्यू किया था n हैट का और बीटा का, उसको आप एक दफ़ा वर्कआउट करें तो फिर आपको उसकी समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर में हमने थोड़ी सी ये क्रॉस प्रोडक्ट्स वैल्यू की है और इंटीग्रेशन एक